without wasting any time, मैं पूरा कंट्रोल देने जा रहा हूं लियो एंड टिफनी जेसुडियन। Good evening, namaskar. आज का टॉपिक बिजनेस फोकस, और उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले टिफनी को मैं कहना चाहता हूं कि वो पहले आपको मैसेज देना चाहती है, उसको बात करने दो, फिर मैं आऊंगा। और my focus is how to develop your business, and that focus that you require, without which you cannot develop your business even if you want to. So Tiffany, go ahead, honey. All right, you have to turn down your microphone. You have to mute. My mic is muted. Technical difficulties, everybody. Give us one sec. There Right. we go. Now, can you hear me okay? Okay. All right. Well, I wanted to talk to you a little bit about freedom. So that is probably the ultimate when you can build a business and have freedom. With most businesses that you build, you are absolutely tied down. You have money, but you don't have time. And that is a constraint that does not allow for freedom. The reason why this business is very different from other traditional businesses, and the reason why this business is so attractive is the freedom that it gives. And not only the freedom, but the cost to start your business and the cost to run your business is so minimal that people in traditional business laugh. It's very, very low. When we first heard the concept, we were thinking, oh, they're trying to pull one over on us. They either don't understand the business or they are trying to manipulate us. That was our thought. But we were attracted enough to learn more. And we did go to a follow-up session where we heard somebody who had years of experience in the business. We heard them speak, and we had the opportunity to ask some questions afterwards. And then we said, okay, we understand how come the startup costs are so low. We don't have to carry inventory. We don't have to have any real estate. So yes, that's doable. And the other part was the money. Is what they say can be produced, is that right? But we decided if we cut that in half, that amount that they said could be produced, if we cut that in half, it was worth it for us to start building this business. So the freedom was very attractive to us. When we started our business, we were in retail, which means Leo had 4 retail clothing stores. And it was a 100-hour per week job. Leo worked 100 hours. I worked 100 hours, sometimes more. And it was really all-consuming. We didn't have lifestyle. There was nothing beyond the business. We were open 7 days a week, and we were very present. With 4 stores, you have to be present. With 1 store, you have to be present. We tried putting people in the stores. They stole money from the cash register. They wouldn't sell. They just anticipated people coming in, and they didn't give the people who came into the store
the sort of welcoming experience that we wanted to give. So we were there all the time. And if Leo was not there, he was sourcing. So he was buying goods to stock the stores. For that, he had to travel. He sometimes drove 4 hours away and 4 hours back, and in the middle had business meetings all in one day. Sometimes he flew, but he was also having to go to Hong Kong and Korea because we had another business, and that was a fabric textile business. So he was going to the Orient to import goods, and he was gone a lot. When this business came along, we said, okay, this could be the answer. What we are looking for is time and money together. We have money. At that time, we did. We had nice cars. We had a beautiful house. But we had no vacations, and we had no time to enjoy the money. I remember when I was getting married to Leo, I arranged my wedding day on a holiday, a national holiday where all the stores were closed. And I said, at least I'll have my wedding off and I'll have my anniversary off every year. That's how bad it was. So the business was attracted to us for freedom. Now, fast forward years later, we found that what they were telling us in the very beginning, at that first time where we learned about the business concept, was true. They were backing it up, by the way, with some documentation, and we still didn't believe because it sounded too good to be true. When we went to the second opportunity to understand the concept, and that's where we met Frank Mazzio and Joan at Diamond, we understood the concept a bit more, and that started us onto the relationship with Frank and Joan, and a person that was in between our sponsor and Frank and Joan. So we were able to ask questions and get good information. But we saw freedom. There was Frank Mazzio, who was a dentist, and that's the way he supported himself and his family. And before we ever were introduced to this concept, he was making enough money here so that he could sell his dental practice. And now he was just doing this. And that was consisting of some nighttime meetings. At that time, it was all face-to-face. Now things have changed quite a bit. So it's gotten a bit simpler now. And he was free during the day. He's had family time. He had time with his wife. And he had a voracious appetite for golf. So one of his dreams was to be able to play golf every day. So now freedom, we saw it. And in our heads, we're thinking, okay, how much money does a dentist make? And how much money would it take to replace that income? So we saw the house that he bought as a dentist. It had a tennis court in the backyard, beautiful neighborhood, lovely piece of property. And we understood a little bit about the lifestyle that dentists can afford in the United States. So we had an idea at least how much money he was making. And then we figured, well, it's got to be a lot more than that in order for him to take the risk of giving up his profession, something that he studied and grew for years and years, and he gave that up. So we were looking at that from a business perspective and saying that anybody that would take that gamble must be pretty certain that this is going to last for a while. And we heard that you can pass this on to the next generation and the generation after that, because your ABO number
will get transferred. And when you've built a business that's generating residual income, that residual income can go on to the next generation. So it was just seeming like this was a perfect fit. We were introduced through Frank to other people that he was being mentored by, who had similar stories. Mega businesses, a prior profession that they were able to give up and retire from, and they were making so much more money here than they ever could have in their prior professions. And when we went to our first major function, that's where we were exposed to a lot of freedom. Actually, Leo was not at that function because he had a business trip to China. I went down, and I went with my sister-in-law, Indy, and her husband, TV, who we had sponsored into the business. So we took about a 10-hour train ride, and we went to the capital of the United States. We went to Washington, D.C. And the only reason why I went was because they kept saying on the audios that these things will give you a better understanding. And these functions will give you commitment because your belief will grow. And these functions will give you a witness. A witness means that you'll see people in abundance, many, many people who have achieved. And when you see so many people with different backgrounds, some easy, some not so easy, that have obtained this level of success, and they're speaking to us one-on-one, that it would help us to shorten the learning curve, which was very interesting to me. I'm always for doing things efficiently. Plus, Indy and TV really wanted to go. Can we let our people that we've got on our team not be accompanied? So we all three went. And I saw Dexter Yeager, Bertie Yeager, Jeff, Steve, and Doyle Yeager for the first time. And Dexter, he was talking like, here's one idea. Here's another idea. They didn't seem related. Well, there's another idea. And I was listening and listening and listening intently and wondering, where is he going? What now what's the point? And all of a sudden, he tied that all together, and we understood very clearly what a gifted teacher he was. Just amazing. And I know somebody who's on the broadcast today who is very much like that. His name is Leo. Very often you'll be listening to Leo, and it seems like, well, he's telling a story, and that reminds him of another story, which reminds him of another story, and that reminds him of another story, and he's out there. But then all of a sudden he seems to bring it home because it's all related to one point. So, and Leo certainly is a gifted teacher as well. Anyhow, that was where I started to understand freedom at that first function in Washington, D.C. Freedom is hard to find. You have great incentive to build this business because you can have freedom. We're talking about freedom to live your life the way you want to live it. We're talking about freedom to live where you want to live. Freedom to do what you want to do. If you have time and money, you have so many choices. You can design your life. And the things that you thought when you were a child that you gave up because you said, oh, now I can't do that. I have to settle down, get committed, get a job. Those things seem to go away. But think of those things that you thought about when you were a child, and you were a better dreamer, I bet. We were all great dreamers when we were children. And if you have time and money, would those things be possible? I would say yes, because you're free.
You're free to design your life the way that you want it. So freedom is an intricate concept, and I understood that freedom was based around the ability to make choices, but I didn't feel it until we started getting freedom. So when we were building the business, we had the opportunity then to release some responsibilities, which gave us more time to build this business. And we continued to release more and more of our business responsibilities in the traditional business so that we could put more time here. And thank goodness in 1998, India opened. Leo started going to India in 1997. And this is how this connection happened. You all are born from that. So it's wonderful. But after things got rolling for us, after a while, we were in a position where we could sell our traditional business. And gee whiz, when we did that, we had freedom. We were kind of in a phased approach where when we sold our traditional businesses, we were not making as much money in this business as we were in the traditional businesses. But with guidance from the upline, we made the right decision. And then we could devote more time and energy here and then grow progressively. So freedom is something that has also been progressive. Doesn't happen overnight. But when I experienced the biggest feeling of freedom, it was even greater than when I no longer had to work those 100 hours a week. The biggest freedom was becoming absolutely and 100% debt-free. For me, that was huge. When our home mortgage was paid and we didn't owe anybody anything, no car payments, no loans, no credit card debt, and no mortgage. And no business loans. And no business loans. When that happened, the freedom was something that they had been talking about from stage that we could expect, but I didn't feel it until it personally happened to us. So it was progressive though. It doesn't happen overnight. It takes a while. There's strategy behind it. To get your finances in order, it's very strategic. And to get your business in a position where you have stability, so you know that you've got a strong foundation in your business, that is strategy. We learned about that. We had help. And when Leo was able to mentor with Dexter Yeager, that was a blessing. That man introduced new concepts to us about freedom. When we saw their house, when we saw their life, when we saw their lifestyle, it was huge, more than I had ever imagined. And it just was a progressive growth where my thinking changed. But freedom is something that you should definitely seek. You should think about that. What does freedom mean to you? What does freedom mean to you? If you had time and money, how would you design your life? How would you spend your days? What would it be like? Where would you live? Where would you go? What would you do? You know, in 2010, we were asked to speak in Moscow, Russia. And what a great trip that was. You get to see the world this way by speaking in organizations. It was a great trip. And our hosts, these were the people that met us at the airport. They took us around, they showed us around, and then they were with us. They escorted us to the seminar.
They were responsible to make sure that we were comfortable and safe and showed up at the speaking venue on time. And they were also responsible to make sure that they were talking positive. You must never talk negative to a speaker before the speaker is going to speak, because the speaker has to give positivity to the crowd. So very important job of the host to just keep the mind of the speaker free. Well, anyhow, our hosts were a young couple. At that time, they were in their 20s. It was Julia and Johan. Julia is Russian. Johan is from Sweden. Now look at the freedom that they have built for themselves. At that time, they were very new in the business, but committed, exceptionally committed. And both of them had excellent English, which was probably something that qualified them for the job to be with us. Very committed to the business, excited about it, but new. So they were full of questions. And Julia, she interpreted beautifully for Leo and me. Did she interpret for you, Leo? Yeah, she interpreted for both of us. And Julia, when she interpreted, she watched the speaker, and whatever body movements the speaker did, Julia did. So if we went like this, Julia went like that. If we laughed, Julia laughed. And her translation was exceptional. She put her whole body into it, which was great, so that the people who were listening, they heard us but didn't understand us. So Julia was responsible for not only saying the words, but communicating the emotion. And she did that with tone of voice. She did that with the pace in which she spoke. If Leo spoke so slowly and softly, she spoke slowly and softly. She just a great translator. Anyhow, they asked a lot of questions, which was exciting for us, because to help somebody new in a foreign country where they didn't have access to the full system was an honor and a privilege. So we kept in touch with Julia and Johan. They would come over to the United States, personally sponsored by the Jaegers. But after they went platinum. Yes, after they went platinum, they would come over to the United States at least once a year. There's a function called Go Diamond. It's a Jaeger function, and you have to be a minimum of silver to attend. They would come over for that. They both worked hard at those functions translating, because other Russians and Swedes came, so they would translate. And we just loved seeing them. We had such a bond after that time we met them in 2010 that it was great. So then they had a baby, and life was going on. They were struggling with the business. And just like us, Johan was a traditional business owner. It's very hard to, find time to build the business. And now they have to support a family, but it's doable. So they did it as well. Now, fast forward, it's 2021. Johan and Julia are really hot, like smoking hot on fire, hot. I would call Johan and Julia perhaps like the hottest couple right now in the Jaeger organization, period. They are on fire building their business. They're rubies. It's going fast. They've gone ruby. And one of their dreams was to live in different countries. So what they did until COVID came, they would live for one place for 3 months, another place for 3 months, another place for 3 months. This is a dream. This is freedom.
So they went, they lived in South America for 3 months. They've lived in different European countries. Then in March of 2020, they came to North Carolina. Just before COVID. Just before COVID really came. And they were able to stay here until recently. But Julia was expecting another baby. And she just had the baby 6 weeks ago. They decided to go back to Sweden, actually, because with the visa and regulations to live in the United States outside of their visa that they had applied for, it was getting extremely difficult. And the medical care in Sweden, because her husband is from Sweden, was free and very high quality. So they decided to go there, and she had the baby. Now they're living in Sweden for a while with their newborn. But very, very doable, building the business with their group in Russia from around the world, and with their group in Sweden when they were around the world. And they've started a group in the United States. They have the freedom to do this because they're so good at these Zoom meetings. They can conduct everything online. They're building relationships so successfully with team members online. They've got a whole strategy and a protocol for the steps to put people through the qualifying process, and then help their people to grow, and then work with the candidates once they have made the commitment. They're growing like leaps and bounds, and this is with COVID, and this is with online, and this is with moving around the world for the past 3 years, and this is with having a new baby. Just amazing. So you must hear them talk about freedom. Actually, I'm going to find out if we can get you perhaps one of their, maybe we can get you a video. They've been asked to speak at a lot of the business development seminars, and they just spoke to us for a short period of time at Winter Conference last weekend before last. But really, really excellent and on fire. To see the growth from them being new, and will this work? And will this work for me? And so many questions, and like, can I do it? And like, how can I change my thinking? From that to where they are now, such strong teachers, and their commitment level so high, and experiencing freedom because Johan doesn't have to have his business anymore, the traditional business. Just amazing. So can you think about that a little bit? What does freedom mean to you? And how does this business fit in? What does freedom mean to you? When you think about being free, what is it? What's your life like? And write that down. And don't put a lid on it. Really, you can brainstorm. We call it brainstorming, where just any idea that comes to your head, write it down. It doesn't matter if that's a good idea or a bad idea at this point. Just write it down. Write it down. Write it down. Those are most likely dreams. And those are most likely fuel for you. By fuel, I mean this, when you can understand it and realize that you can have it, will be something that will motivate you to build this business. It is so worth it. Freedom seems relatively intangible until you start getting it. So if you don't have freedom in mind, now is a good time. Beginning of the year and beginning of a new month. Just get that going in your mind. And I hope that helps. Love you lots. And I'll turn it over to Leo. Was that good? Was that good? That was fantastic. But let me tell you something that I want to tell you about Julia and Johan. They didn't go fast.
Everybody wants fast. They did not go fast. 10 years. Can I make a point? Yes. If you're in your 30s and you have financial freedom, you're fast. Go ahead. I'm not unmuted. Oh, so Tiffany says that if you're in your 30s and you have financial freedom, that's fast. But in terms of fast, people join this business and they want the results. Everybody wants results. If you go to engineering college, you want to graduate and get a degree fast, but it takes 5 years. If you want to become a doctor, it takes longer. If you want to become a lawyer, it takes the full time and then you have to pass the bar exam. It takes longer. If you want to be a chartered accountant, it takes the full thing and then you have to do that chartered accountant, exam, and that takes a long time to prepare. And so anything that's meaningful, that has any weight, takes time. So this took 10 years for them to be on fire. Now, in the middle, they were growing every week, every day, listening to audios, attending meetings once a month, BDS, this thing, that thing. They were attending everything and growing on the inside and growing on the inside and becoming stronger and stronger. But the money in the bank was not matching the work. The money did not match the work. Whereas people in this business who they come in and they say, यार इतना मैंने मेहनत किया, पैसा नहीं बन रहा, इसमें दम नहीं है. ये गलत है, क्योंकि ये बिजनेस में आप काम करोगे, कुछ पैसा नहीं बनेगा. आप ऑडियो सुनोगे, कुछ पैसा नहीं बनेगा. आप किताब पढ़ोगे, कुछ पैसा नहीं बढ़ेगा. आप मीटिंग जाओगे, कुछ पैसा नहीं बढ़ेगा. लेकिन अंदर से आप उग रहे हो, यू आर ग्रोइंग. फिर आप थोड़ा बिजनेस करोगे तो थोड़ा सा पैसा मिलेगा. आप वो पैसा देख के कहोगे, यार कमाल है, मैंने इतना मेहनत किया है, इसको पैसा कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है. फिर आप काम करोगे, थोड़ा और पैसा बनेगा. फिर आप कहोगे, यार इतनी मेहनत की है, हाँ पैसा उग रहा है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं, ये कोई पैसा ही नहीं है. फिर आप थोड़ा काम करोगे, फिर और पैसा मिलेगा, लाइक बढ़ रहा है. फिर आप काम करोगे, फिर वो पैसा बढ़ रहा है. फिर आपको पैसा मिलेगा और आप थोड़ा काम करोगे, फिर आपको और पैसा मिलेगा, आप उससे कम काम करोगे. अब ये काम इधर है और पैसा इधर है. धीरे से पैसा इधर है और काम इधर है. लेकिन यदि आप ठीक तरह से बिजनेस नहीं बढ़ाओगे और आपका दिमाग सही तरह से नहीं रखोगे, तो ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा. आप फिर से पैदा होके करो, फिर भी नहीं होगा. नहीं मैं वापस आके करूंगा, वापस आके जितना करना है कर लो, नहीं होने वाला है. जब तक आप सब्र नहीं करोगे कि मेरा काम एक दिन मुझे इतना पैसा देगा और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, ये यदि आपके दिमाग में नहीं है, नहीं होने वाला है. तो मेरा क्या टॉपिक है? फोकस, इंपॉर्टेंस. ये बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जब आपने प्लान देखा, आपको कुछ हुआ, उचकी हुई ना, प्लान देखा तो उचकी हुई, लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग. फिर काम किया, मेंटली बैठ गए. क्यों? क्योंकि जल्दी नहीं हो रहा यार. कोई और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है. मैं आपको बताता हूं,
ज्यादातर मेजॉरिटी जो भी बिजनेस खोलते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस, मेजॉरिटी हारते हैं, माइनॉरिटी पैसा बनाता है। क्योंकि जितने भी लोग पैसा डालते हैं बिजनेस में, वो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ग्राहक डेवलप करने में टाइम लगता है। और जब ट्रेडिशनल बिजनेस खोलोगे तो उसको कोई परवाह नहीं है तुम्हारे पास ग्राहक है या नहीं है, ओवरहेड है ना, पैसा जा रहा है हर महीना खटाखट खटाखट, और ग्राहक नहीं आ रहा है हर महीना जैसे आपको चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत है ग्राहक डेवलप करने में, सेल्स करने में। तो और आप ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मेरे साथ बात करोगे तो मैं आपको प्रोफेसर जैसे सिखा सकता हूं। मैं कोई कम नहीं हूं ट्रेडिशनल बिजनेस में, मैं बहुत लाइक सॉलिड हूं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ग्राहक मिलने में बहुत दिक्कत है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत क्या है, ग्राहक रखने में। ग्राहक आती है जाती है, आती है जाती है, तो वो ग्राहक को रखेंगे कैसे? क्योंकि जब आप ग्राहक को रखोगे तब आपका बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, दैट्स नॉट अ बिजनेस। हर रोज आपको और काम करना, और काम करना, और क्योंकि वो उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब ग्राहक आती है और आपके साथ रहती है, दैट्स बिजनेस। यानी कि आप उसको ठीक तरह से संभाल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो माल, क्वालिटी माल दे रहे हो, कुछ दिक्कत है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब वो ग्राहक रहेगी आपके साथ, नहीं तो भाग जाएगी किसी और के पास। वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। करके मेजॉरिटी जितने भी लोग बिजनेस में जाते हैं वो मार खाते हैं, क्योंकि उनका क्या है बैकग्राउंड, कि मैं जाता हूं नौकरी पे, ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा नौकरी में जैसा बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे को पगार मिलेगी। लेकिन बिजनेस में कोई यकीन नहीं है कि पगार मिलेगी, क्या पता। मैं सिर्फ अपने दिल से जा रहा हूं बिजनेस में, गारंटी कुछ नहीं है मेरे को कि पगार मिलेगी। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में मेजॉरिटी हारते हैं, तो इस बिजनेस में और भी हारते हैं। क्यों? मैं बताता हूं आपको। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में। इंसान इतना इन्वेस्टमेंट करता है कि वो 1, 2, 3 साल तक ठहरता है, उसको सबर नहीं है, लेकिन पैसा उसको रखता है उस बिजनेस में, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट किया है। वो 2 दिन में गायब नहीं हो सकता है, 2 महीने में गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना किया है। आज तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, हमारे जमाने में लाखों का इन्वेस्टमेंट था। तो इतना पैसा आप बिजनेस में डालोगे तो आप कहां जाओगे? आप तो बैठोगे और काम जबरदस्त करोगे। लेकिन इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा काम किया, नहीं उसका रिटर्न आया, हम गए, मुझे नहीं चाहिए। और आप सोच रहे हो यार मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, 8 लोग गायब हो गए। नेचुरली उनमें कोई दम ही नहीं है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? जिसमें दम है ना? अपने जैसे, आप अपने जैसे लोग को ढूंढ रहे हो जिसमें दम है। क्योंकि आप में क्या दम है? कहते हो यार मेरा पीवी देखोगे तो आप कहोगे मेरे में दम नहीं है। अरे आपकी पीवी को देखना नहीं है मुझे, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं कि आप इस बिजनेस में टिके हो। जो टिकता है उसमें दम है। अब उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या है? फोकस। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, ढंग का प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि का प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? फोकस। नो फोकस नहीं, फोकस है, कमाल है। मैं हर वक्त इस बिजनेस के बारे में सोचता हूं। अच्छा, सोच में कोई पैसा नहीं है, काम में है। सोच और काम, सोच अलग। गाड़ी लो ना फर्स्ट क्लास, उसमें पेट्रोल मत डालो, चाबी मत हाथ में रखो, बैठो नहीं उसमें, वो कहां जाएगी गाड़ी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी है, नया लिया है यार, कमाल है, देख ले।
पसंद कर ले, बैठ तू ड्राइवर सीट में। यार चाबी कहाँ है? चाबी सेफ में है, सेफ में, तिजोरी में। क्यों? यार नया गाड़ी लिया, उसको बाहर लेके जाएंगे तो ठोस वोस हो जाएगी, तो मैं उसको वहां रखा हूं गैराज में बस। अच्छा वो क्या करेगी आपके लिए? अरे गाड़ी देखो ना, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन गाड़ी लिया, कुछ काम का नहीं है। अब ये तेरा बिजनेस तेरा वैसा गाड़ी जैसा है, सोचते रहो तुम। क्यों? नहीं नहीं, पर ऐसा हुआ ना, मेरे जॉब में ऐसा है, फिर वो फैमिली का, फिर इसकी शादी होने वाली है, फिर मकान का ये बहुत बहुत इश्यूज हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इम्तिहान। हाँ, दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज, बहाना इंडिया में। बच्चों का इम्तिहान है। अरे तू इम्तिहान दे रहा है कि बच्चा दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा इम्तिहान है तो हम कुछ कर नहीं सकते। कमाल है यार। जब हम इम्तिहान देते थे, हमारे पिताजी और माताजी ऑफिसर्स क्लब जाके मौज करते थे। हम इम्तिहान दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इम्तिहान उन्होंने दे दिया है, बहुत साल पहले दे दिया है। मेरी बच्ची जब इम्तिहान दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूं इम्तिहान, सॉरी, उसको करने दे। नहीं नहीं, पर उसको ना, यदि तुमने अपने बच्चों को ठीक तरह से पाला है, वो सीखेंगे और वो बहुत अच्छा करेंगे इम्तिहान। बहाना है, इम्तिहान, शादी, इसका उसका प्रमोशन, इसका ये, उसका ये, घर, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, मोदी, प्राइम मिनिस्टर को भी खींच ले अपने बहाने में कि मोदी ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या बात कर रहे हो तुम? फोकस कहाँ है आपका? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। सोचने और सुनने में, पढ़ने में आप अंदर से उग रहे हो, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके लिए अलग फोकस चाहिए। एंड आई विल टेल यू व्हाट द फोकस इज। फोकस क्या है कि आप अपने, अच्छा, ड्रीम, सपना, सपना है, लेकिन सपना नहीं है, ख्वाहिश है। सपना और ख्वाहिश के बीच में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सपना है, हाँ 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 है, नहीं, ख्वाहिश है। क्योंकि उसका पीछा नहीं करोगे ना, तो वो सपना नहीं है। यदि उसका पीछा नहीं करोगे, वो सपना नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो मैं जवान आदमी था, मेरे मम्मी ने मुझे डांटा। मैं यहां रहता था यूएस में। मैंने उनको मकान खरीद के दिया, गाड़ी खरीद के दिया। मैंने अपने पिताजी को बोला शोफर चाहिए तो वो भी ले लेंगे, ड्राइवर भी ले लेंगे। नहीं नहीं, आई ड्राइव। मैं सक्सेसफुल इंसान था। मैं 25 साल का था जब मैंने दिल्ली में उनको मकान खरीद के दिया। ओनली 25 years old। घर का सबसे छोटा बच्चा। 2 मेरे बहनें थे, वो मेरे से बड़ी थी। लेकिन मैंने मम्मी एंड डैडी को मकान खरीद के दिया। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। जनरल साहब थे ना, What do you mean I don't need your money? Just because you live in America, you're going to buy us a house? I said, Dad, I'm buying the house for selfish reasons. I'm not buying it to make you happy. I'm buying it to make me happy. Right? Because you want to go and live in Bangalore. Well, I cannot afford Delhi. Exactly. I can afford Delhi. I don't want to come from America, go to Europe, come to India, then at 2 o'clock in the morning, I have nowhere to go. I have to stay at the airport. And then in the morning, I have to catch another flight to Bangalore. I'm doing it selfishly. If I buy you a house in Delhi, when I come to Delhi, you're right there. I don't have to stay in the airport. Where can you, in 1974, कोई देगा आपको 4-5 घंटे के लिए होटल रूम? No. So I said for that reason, no, I'm going to go to Bangalore. तो मैंने मम्मी को बोला, I'm buying you a house.
She said, your father will get very upset. I said, no, I'm buying you a house. I'm not buying him a house. I'm buying my mother a house. She says, you cannot do that. I said, aha. When I was very young, जब मैं बहुत छोटा था, आपने एक चीज बोला मुझे, मेरे दिमाग में टिक गया. कहती है, क्या बोला मैंने आपको? मैंने मम्मी को बोला, आपने बोला कि जब कोई आपके लिए कुछ अच्छी चीज करना चाहते हैं, उनको करने दो. तो she said, हाँ, बाइबल में लिखा है. मैंने बोला, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा चीज करना चाहता हूँ, आप मुझको नहीं करने दे रहे हो. She said, अच्छा ठीक है. मैंने उसको मकान करके दे दिया. पिताजी कह रहे हैं, what did you do? I said, listen, it's not between you and me, it's between me and my mother. हम भी बड़े चंट थे. So he said, that's like, I said, I'm your son. I think like you. If I have a problem, I go around it. But I got to do what I got to do. अब मैं इतना करके एक बार मैं घर गया और मैं होटल में, ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहता था, जब मेरे मम्मी डैडी 1 किलोमीटर होटल से रहते थे. वो कहते थे, हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो? मैंने बोला, वो आपका मकान है और मुझे अपना इंडिपेंडेंस चाहिए. मुझे 4 बजे सुबह उठना है या 9 बजे सुबह उठना है, वो मेरे ऊपर है. लेकिन मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा तो देन यू नो, मैं 4 बजे जाग जाऊंगा तो सबको डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि मकान बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो सो रहे. मैं लोगों को जगा दूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक कॉफी, ये कुछ करना वाला है. और ऊपर से यदि मैं देरी से सोना चाहता हूं तो आप कहोगे, चलो तुम नाश्ता नहीं खा रहे हो. तो मैं अपने होटल में रहता हूं और आप अपने मकान में रहो. पहले उनको थोड़ा लगा कि क्या चीज है, मेरा लड़का 1 किलोमीटर दूर इतना पैसा खर्च के ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहता है, लोग क्या कहेंगे कि आपका लड़का आपके साथ क्यों नहीं रहता है. मैंने बोला, लोग की ऐसी की तैसी. मैंने कभी लोग को माना है? यदि मैं लोग को मानता तो मैं इंडिया नहीं छोड़ता. मैं किसी को नहीं मानता हूं. मैं अपना सपने का पीछा करता हूं. मैं और किसी को नहीं मानता हूं. तो उसने बोला, ठीक है. तो इतना करके भी एक बार मम्मी कहती है, व्हाई डोंट यू स्टे ओवर, आज तुम यहां रह जाओ रात को. तो यार कितना आप बोलोगे. तो एक बार मैंने बोल दिया, ओके, आज रात को मैं यहां रहूंगा. तो अभी 7 बजे मुझे कहीं जाना था, किसी से मिलना था, 7 बजे शाम के. तो मम्मी ने बोला, आप कब आओगे वापस? मैंने बोला 10 बजे तक आ जाऊंगा. खाना खाना है, थोड़ा मीटिंग करना है, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा वापस. और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस वाला था. मैं 26-27 साल का था, इंडिपेंडेंट, ग्लोबल. मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूं. मैं 10 बजे भी नहीं आया, मैं 11 बजे भी नहीं आया, मैं 12 बजे भी नहीं आया, मैं 12:15 बजे आया. मम्मी ने इतना डांटा मुझे, तुमको नहीं मालूम, मैं 10 बजे से घबराहट हो रही हूं, क्या पता क्या हुआ उसके साथ. ता, 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 ता. मैं देख रहा हूं कि कमाल है, मैं पूरी दुनिया भर घूमता हूं, उसको कुछ नहीं मालूम. लेकिन मैं दिल्ली में दोस्तों के साथ थोड़ा जम गया, हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा वैसा. टाइम गुजर गई यार, मैं कोई अपना घड़ी थोड़ी देख रहा हूं. और मैं ऐसा डांटा जैसे मैं 10 साल का था. मैं उसको देख रहा हूं. फिर मैंने बोला, आर यू डन? खत्म? डोंट टॉक लाइक दैट टू मी. No, I'm just asking. No, you don't have any respect. I thought you were dead. I thought you had an accident and you were lying on the side of the road.
I thought that somebody had I said. Finally, जब खत्म हो गया, I said, Mom, you have a problem. I have a problem. You're the problem. No, you have a problem. You think negative. When you expect something and it doesn't happen. जब आप कुछ चीज चाहते हो और वो नहीं हुआ, आप नेगेटिव सोचते हो. एंड पहली बार मेरे जुबान से निकली, मेरे जुबान से ऐसी चीज निकलती है जो मैं भी हैरान हो जाता हूं कि ये कहां से आया. मेरी जुबान से निकली जब मैं 27 साल का था, और आज तक मुझे मालूम है ये चीज. मैंने उनको बोला, जो सोच है ना वो उगता है. आप भी अभी सोचोगे. ऐसे कोई सोच स्टैटिक नहीं है, वो आगे बढ़ता है. तुम नेगेटिव सोचोगे तो पहले आप सोचोगे, अरे लियो नहीं आया, 10 बज गया, 10:15 हो गया, लियो नहीं आया. अच्छा, ट्रैफिक, दिल्ली में ट्रैफिक, 10:30 बजे, लियो नहीं आया. अब वो सोच उगता है, क्या पता क्या हुआ. अब वो ट्रैफिक के ऊपर से वो उग गया, क्या पता क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं. थोड़ा टाइम देंगे. अभी 11 बज गया, अरे लियो नहीं आया, हो सकता है कुछ हुआ. अभी 1 लेवल हायर. फिर 11:30, अरे एक्सीडेंट, नेक्स्ट लेवल. कोई सोच आपके दिमाग में स्टैटिक नहीं है, वो उगेगा, जबरदस्त उगेगा. आपको कंट्रोल नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज कंट्रोल है, वो सोच को निकालो, नहीं तो वो उगेगा. हर वक्त सोच उगता है. प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच दोनों उगते हैं. एक नहीं कि ये उगता है वो नहीं उगता है, नहीं, दोनों उगते हैं. बोथ ग्रो. द प्रॉब्लम इज नेगेटिव सोच को निकालो. और मेरी माँ मेरे को देख के ऐसा हैरान से देख रही है कि ये कहां से आया है, लड़का मेरा है लेकिन ये कैसा बात कर रहा है मेरे. एंड मैंने उसको बोला, प्लीज, आई एम नॉट 10, आई एम 27, आई एम ऑल ओवर द वर्ल्ड. I could die tomorrow in a plane crash and you will hear about it on the news. And that's okay too, because you know what? I'm in a plane a lot. Chances of me dying is far superior than your servant dying, because your servant does not go in planes. I go in planes. So she's like, "Arey kamal hai yaar, ye kaisa baat kar raha hai mere sath?" I said, so don't think negative because it grows in your head. And I'm fine, but you killed me. You had me have an accident. You had me do all kinds of things and nothing happened. I'm here. And so I am an adult. I can stay and talk for another hour or two, or I might just call you and say, I'm not coming tonight. It's late, I'm going to my hotel room. I should have that freedom as an adult. And I shouldn't feel like always that my mother has a problem. I have my own problems. I should not have your problems. You have your problems, I have my problems. Daddy has his problems and your servant has her problems. So keep it clean. मैंने ये कहानी काय को बताया? अपने मम्मी को नीच डालने में? न, वो तो माँ है ना, वो तो घबराएगी अपने बच्चे के बारे में.
मैंने आपको ये बताया है क्योंकि आपके दिमाग में आपका डायमंड शेप, आपका सपना नहीं है तो उगेगा नहीं, इट वोंट ग्रो। आपको सिर्फ डायमंड जाना है लेकिन काम नहीं करना है, इट वोंट ग्रो। बट यदि आप उसको उगाओगे तब आपको ऑटोमेटिकली काम करने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जब होगी, इट्स नॉट सॉलिड, इट्स नॉट ग्रोइंग इन योर माइंड। नाउ देयर आर डिस्ट्रैक्शंस है बहुत, जैसे पंजाबी में कहते हैं बुतेरे हैगे ने डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन जब एक बार वो टिक गया ना आपके दिमाग में कि मुझे ये चाहिए सपना, कौन सा सपना मुझे क्या मालूम, वो आपको मालूम है। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सपना एक बार जम गया ना, टिक गया तो आपने उसका पीछा करना ही करना है मरे तक। ये नहीं कि अच्छा मैं एक इंसान जो मैंने स्पॉन्सर किया था, वो कहता मैं 1 साल करूंगा, नहीं जमा तो मैं गया। मैंने बोला आप अभी जाइए। तो कहता कमाल है यार, how you can say that to me? American था, how do you say that to me? I'm willing to give it 1 year. I said, man, understand one thing. I don't know why. You're older than me and I understand more than you. Understand that your dreams don't have a time limit. They don't have a expiration date. They don't have a qualifying amount of work or a price. Whatever. You do whatever, not 1 year. I said, keep going, man, because if you know, I'm telling you right now, it's not going to happen in a year. Especially when you put a year, it's not going to happen. Guaranteed. It might happen in a year if you didn't say a year, but the way you say a year, it's not going to happen. Understand that you have to pay the price of your success. आपकी सफलता का जो भाव है वो आपने नगद देनी है, कार्य के साथ, पैसे के साथ। पैसा क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा है ना। क्या आपको ऑडियो फ्री में मिलती है? हेलो, आपको फंक्शन फ्री में मिलती है? नहीं। आप कहोगे यार वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना पैसा। आप भिखारी को 100 रुपए दोगे फुकट में? आप कहोगे मेरा गाड़ी साफ करो, फिर दोगे कुछ पैसा। फुकट में देना नहीं है किसी को, मैंने नहीं देना है। हम दे चुके हैं जब हम नादान थे, बेवकूफ थे। अभी मैं किसी को नहीं देता हूं जब तक वो कुछ करेगा नहीं। हाँ, मैं कभी कभी उसको कहता हूं कि मुझे थोड़ा खराब लगेगा तो मैंने उसको कुछ भी करने को देना है, तब मैं दूंगा कुछ। बट आप जो पैसा दे रहे हो फॉर द ऑडियोज एंड द बुक्स एंड द फंक्शंस एंड द मीटिंग्स, ओके, ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन पैसा है ना। आपको पैसा देना पड़ेगा, उसका भाव नहीं है। आपका सपने का सफलता का भाव नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। आपको अपनी अकल लड़ानी पड़ेगी। हाँ, सिखा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट अकल लड़ाता है या नहीं? सीखने में आपको अकल लड़ाना पड़ता है, नहीं तो आप सीख नहीं रहे हो। आपको अपना इमोशन प्राइस देना है, इमोशनल प्राइस। ये हर बिजनेस में देना है, क्योंकि कभी कभी आप इसको देखोगे, अभी आप घर में आओगे, कहोगे एक मेरा कांटेक्ट है, वो अभी बड़ा क्लाइंट बनने वाला है। फिर आप मीटिंग करोगे उसके साथ, फिर वापस घर आओगे, बीवी अब हस्बैंड कहेगा अच्छा कैसा गया, फैंटास्टिक होने वाला है। फिर तीसरा मीटिंग, कैसा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन हो रहा है, क्लाइंट आ रहा है। चौथा मीटिंग,
क्यों, क्या हो गया? उन्होंने मन बदल दिया, वो दूसरे के साथ गए, दे वेंट विद अनदर कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इमोशनल प्राइस, ऑफ कोर्स हर एक को देना है, इसमें भी देना है। फिजिकल प्राइस, हमारे जमाने में हम 4 घंटा जाते थे प्लान दिखाने को और कोई है ही नहीं वहां पर, 4 घंटा वापस। टाइम 8 घंटा गैस गाड़ी का, ड्राइविंग, कुछ नहीं। फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड वक्त, टाइम देना है। मैं कह सकता हूं, अरे मैं इतना सक्सेसफुल इंसान हूं, ग्लोबल इंटरनेशनल बिजनेसमैन, मैं ऐसा फैसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो नहीं होगा। I would not be in this business. I would be just like other business people who look at it and say, it's not for me. So you have to focus, आपके दिमाग में उगना है ये चीज। क्या चीज? प्लैटिनम जाना है, Q12 जाना है, नगद पैसा चाहिए जब आप काम नहीं कर रहे हो। अभी पैंडेमिक में हमने बहुत कम किया है और आ रहा है धनाधन, धनाधन। ऐसा हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा हुआ ही नहीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ काम नहीं किया और पैसा आ रहा है, आ रहा है। एंड व्हाट? नो ओवरहेड, नथिंग, जस्ट पैसा। पैसा आता था ट्रेडिशनल बिजनेस में, मेहनत करके नया क्लाइंट, ये वो, इधर से उधर। कभी कभी एक क्लाइंट के लिए मैं $7,000 खर्च करके हांगकांग जाके वापस आता था, एक क्लाइंट के लिए, और वो भी गारंटी नहीं कि वो क्लाइंट मेरे से माल लेगा, उठाएगा। नया सैंपल्स चाहिए उसको 3 हफ्ते में चाहिए। कोई मैं यहां से 3 हफ्ते में हांगकांग से या कोरिया से सैंपल निकाल सकता हूं? नो, जब तक मैं नहीं जाऊंगा मैं कर नहीं सकता। तो मैं ऐसे उठ के वेडनेसडे को मैं न्यूयॉर्क से आता था और मैं अपने बीवी को कहता, टुमारो आई एम गोइंग टू सोल कोरिया, टुमारो। Yeah, but on Saturday we have no, I'm going to Korea. और वो भी गारंटी नहीं। इतना करने के बाद जब पैसा आता था, $1,00,000 में से $85 ओवरहेड, कमीशंस, रॉ मटेरियल्स, ट्रिप, फ्लाइट, होटल रूम, टैक्सेस, 15% बचता था। अभी जितना भी आ रहा है सारा मेरे जेब में, जस्ट टैक्सेस, टैक्सेस और टैक्सेस। कोई इंसान है दुनिया में जो टैक्स नहीं भरता है? तो टैक्स है यार। लेकिन सारा जो आता है मेरे जेब में, मेरे बीवी की जेब में, हमारे अकाउंट में, किसी को ना हमने देना है ना लेना है। ऐसा चीज मुझे चाहिए था और मेरे दिमाग में उगा 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 और नहीं हुआ, उगा 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 और नहीं हुआ, उगा 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 थोड़ा सा हुआ, उगा 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 थोड़ा और हुआ, उगा 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 थोड़ा और हुआ, और फिर उगा बहुत हुआ, उगा बहुत से ज्यादा हो गया, उगा और भी बहुत हो गया। बट यदि मैं इस बिजनेस में नहीं टिकता, कुछ नहीं होने वाला। और टिकना रिन्यूअल नहीं है, टिकना है कि उसको उगाना है और उसके पीछे कार्य करना है ताकि उसका फल एक दिन मुझे मिलेगा। So the importance of this business, आपको, मुझे मालूम है कि असल में आपको मालूम नहीं है, क्योंकि यदि आपको मालूम होती जो मुझे मालूम है, आप छोड़ते नहीं एक दिन के लिए।
आप तो उसको मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहो, तब जब तक आप उसको बिल्कुल उसका, जैसे मैं कहता था ना, गन्ने का रस, वो गन्ने का रस उसको उसके थ्रू डालो ना, यदि वो हाथ का है ये इलेक्ट्रिक है, जब वो गन्ना निकलता है उसमें एक बूंद भी नहीं है, ड्राई। ऐसा इसको निचोड़ो। अच्छा बाई, जब हम छोटे थे, बाई हमारे घर में बहुत सारे लोग थे काम करने वाले, क्योंकि मेरे पिताजी काफी बड़े थे, रौब ज्यादा पैसा कम। मिलिट्री ऑफिसर, रौब ज्यादा पैसा कम। तो लेकिन बहुत सारे लोग काम करते थे। एक बाई थी जो सिर्फ कपड़े धोती थी और कुछ नहीं करती थी। एक दूसरी बाई थी वो पकाती थी। एक तीसरी बाई थी वो आके घर को साफ करती थी। एक चौथा इंसान था वो गार्डन को संभालता था, बगीचे को। एक और आदमी था वो हमारे पिताजी का गाड़ी चलाते थे, और जब हम जाते थे वो हमारे पिताजी का गाड़ी है, हमारा गाड़ी, तो जब भी हम जाते थे वो ड्राइवर था। सारे लोग काम कर रहे थे भाई साहब, लॉर्ड फॉकलैंड जनरल साहब के घर में। लेकिन घर में जो फर्नीचर था वो MES का फर्नीचर था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। जो घर में जो भी था, नवार का कॉट था, बेड नवार का, हम उसमें सोते थे उन दिनों में। और मैट्रेस था वो क्या, नारियल का जो था ना, व्हाट डू यू कॉल इट, नारियल का वो कत्था कत्था। उसका बना हुआ था बेड, जनरल साहब का घर, नारियल का मैट्रेस। अरे मैं याद कर रहा हूं जैसे जब मैं छोटा था, तो हम वहां पर बड़े मस्त आराम से, बहुत काम हो रही है, लेकिन वो सब MES का था, हमारा कोई माल ही नहीं था। जस्ट रेडियो, टेलीविजन उन दिनों में थे नहीं, रेडियो हमारा था, रेफ्रिजरेटर हमारा था, कपड़ा लता हमारा था, जूता हमारा था, दैट्स इट। और सब, और बर्तन, और सब मिलिट्री का। तो उन दिनों में हम कहते थे कि मैं देखता था लोगों को इतना मेहनत, तो मैंने बोला यार मेरे को भी ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, और मैंने मेहनत किया। जब हमने एमवे का बिजनेस देखा, मैंने बोला अरे बाप रे, आजादी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम मीटिंग गए, ये किया वो किया, मैंने SA 4400 देखा एमवे का, मैंने बोला यार इसका आधा भी पैसा आ जाएगा तो हमने करना ही है। एंड उससे आधा क्या, डबल से डबल से डबल आ गया, हम खुश। तो आपको सोच करनी पड़ेगी, यदि आप मेरे जैसे जानते हो ना, आप एक दिन नहीं छोड़ोगे, आपने तो करना ही है। और आजकल मैं सोचता हूं कि काफी अच्छा है, फाउंडर प्लेटिनम में 1 लाख बच रहा है महीने का, राइट, अप्रोक्सीमेटली Q12। हाँ, यस लियो। कोई जवाब दो। हाँ हाँ यस। तो फाउंडर्स प्लेटिनम Q12 1 लाख बना रहा है, तो 1 लाख कम पैसा नहीं है। 1 लाख ऐसा है कि कोई और आपके घर में काम कर रहा है लेकिन खाना नहीं खा रहा है, और उसको सेपरेट बेडरूम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक और इंसान आपके घर में कमा रहा है और आपको पैसे देके जा रहा है। कुछ रेफ्रिजरेटर से एक दूध का बूंद नहीं उठाया उसने, सिर्फ ये फिक्टिशियस आदमी ने और या औरत ने 1 लाख बनाया और आपके महीने का। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो 1 लाख और अच्छा है ना, 1 लाख और अच्छा है। और यदि आप 1 लाख से कम कमा रहे हो, 1 लाख बहुत अच्छा है।
So थोड़ा ध्यान दो. This is a fantastic thing. लेकिन आप if you don't focus, और आप कहोगे यार मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूं, अपने फैमिली पे फोकस, नहीं नहीं नहीं, आप 10-12 चीज को फोकस दे सकते हो, ऐसा नहीं है. कुत्ता एक चीज को फोकस देख सकता है. एक बार उसके कान खड़े हो गए ना, उसने देखा कि कोई आ रहा है, वो सिर्फ उस पे फोकस करता है और किसी पे नहीं करता है. लेकिन वो कुत्ता है ना, मैं एक कुत्ता थोड़ी हूं, मैं काफी चीज में फोकस कर सकता हूं. जानवर जो है ना, एक बार उसकी आंख जम गई ना उसके खाने पे, तो वो ही सोचता है कि मैं उसको खाऊंगा, और कुछ नहीं है, सारी चीज एलिमिनेट हो जाता है. फोकस. हम कुत्ते थोड़ी हैं, हम शेर थोड़ी हैं, हम इंसान हैं. हम काफी चीज को संभाल सकते हैं एक साथ. संभालो और सपना आपका खड़ा करो. Okay, I'm done. I took a lot of time. 12 minutes extra. सही सही लियो, एकदम सही, एकदम सही. फरवरी का बहुत ही बढ़िया मील मिल गया है, ब्रेन फूड. उगाओ. बहुत फर्टिलाइजर डाला है, अभी उगने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है उसको. किसी से लियो को कुछ पूछना है क्या? लियो और टिफनी. You want to ask any question? टिफनी, आज का ये सेशन में काफी जबरदस्त ड्रीम बिल्डिंग हुआ है. थैंक यू फॉर दैट. एंड लियो, एज ऑलवेज यू से कि लैक ऑफ फोकस इज द ओनली रीजन व्हाई वी डोंट ग्रो. Real freedom through focus. Thanks a lot. You have great confidence in my Hindi ability. You're speaking Hindi to me and English to Leo. He's so caught up in the idea of thinking, his mind is going crazy. I love it. अच्छा, यहाँ पर बर्फ होने वाला है 14 इंच. You want to shut up your mic? तो यहाँ पर 14 इंच बर्फ होने वाला है आज. तो शरद क्या सोच रहा है? माउंट एवरेस्ट? नो 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 नो. Fantastic, Leo and Tiffany. Sharad, you would like to add something? नहीं, कुछ नहीं बात करनी है मुझे. So, thank you, Leo. Thank you, and thank you, Leo and Tiffany. It was great. और हमने आज काफी सारा इनपुट्स आपसे लिया है, and we are going to follow it. So, thank you. Have a great day ahead, and good night, everybody. Good night and thank you, Leo, Tiffany. Good night. Thank you.